Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 22nd and 23rd of December. This video will be quite interesting for all the competitive exams. In this video students, we will be talking about Prahlad Joshi. He has launched credit guarantee schemes, right? Then we will be talking about Amit Shah, who is our Home Minister, has inaugurated a 59th edition of a conference. It was inaugurated in Odisha. We will be discussing that in detail. Then we will be talking about CBDT, that is Central Board of Indirect Taxes and Custom, has launched new initiatives to enhance the taxpayer service. Then India has attained growth in production of various key minerals, right? We have discussed multiple times about the critical minerals, why they are important for us, why they will be required for India's development in future. We will be discussing all these things in detail. So stay tuned us with till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. We upload the daily current affairs video at 5 AM in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are also uploaded on regular basis. That will help you to prepare better for your competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. We are talking about our Union Minister Prahlad Joshi, right? He's our Union Minister of Consumer Affairs, Foods and Public Distribution. Also Union Minister of New and Renewable Energy. Correct? So recently he has launched a credit guarantee scheme, and it has been launched for the electronic negotiable warehouse receipts based pledging financing in New Delhi. I repeat, as you can see here, Prahlad Joshi has launched a credit guarantee scheme for electronic national negotiable warehouse receipts, right? And this is based the pledged financing in New Delhi. This scheme aims to provide 1000 crore rupees to support the post harvesting, right? We discussed about warehouse, right? What is these warehouses? Warehouses are basically where you can store your goods, correct? So for post harvesting, when the farmer harvest, right, and there is a surplus of harvest, then the farmers will able to store your produce in these warehouses, correct? So 1000 crore rupees has been provided as a corpus to support the post harvesting for the farmers, correct? As per the scheme, these farmers, they can access the credit by depositing their produce stored in the WDRA, that is your Warehousing Development and Regulatory Authority. Then under the scheme, loans up to 75 lakh rupees till 2 crore rupees can be provided based on the agriculture produce, right? Also it offers a guarantee fee of 0.4% per annum for the farmers and 1% for non-farmers. So this is your credit guarantee scheme. As the name itself suggests, guarantee scheme, that is credit is money, and money scheme that will be helping the farmers for storing their farm produce after the harvest. Also students, let's revise some current affairs. Recently, President of India Draupadi Murmu ma'am was honored with the honorary doctorate where in Algeria, right? Then recently cabinet has approved the MSP, right, for rabi crops for FY26. Then recently Mera Hou Chongba festival, it was held where? It was held in Manipur, right? Then recently, remember railways, they have decided to cut the advance booking period from 120 days to just 60 days. Apart from this, if we talk about which countries is the first recipient of rupee loan under the IDEAS,
of Government of India. So the first country to avail loan under this ideas of the Government of India is Mauritius. Then PM Narendra Modi inaugurated Karam Yogi Saptah. It was inaugurated where? In New Delhi. Then which state has launched AI tool Siksha Copilot for teachers? So this AI tool Siksha Copilot was launched by the Karnataka state. Then apart from this, remember E-Sharam one-stop solution has been launched for unorganized workers by Mansukh Manvia ji, and recently 9% overall prevalence of the diabetes has been seen in Jammu as per the study. Apart from this, it is Assam state that has launched Swift project, right? It was launched with the help of Asian Development Bank. Then apart from this, remember NCRTC, they have organized the first Namo Bharat Divas where in New Delhi. Then which state has launched Citizen Sentinel application to keep track of the traffic rule violations? So it was launched by Kerala state. Apart from this, which government has set up Rajasthan Economic Tribal Task Force? I have said it, so it is Rajasthan government that has set up a economic revival task force. Apart from this, if I ask you recently, which country is richest in terms of the sovereign wealth fund? It is Abu Dhabi. Then Om Birla ji, our speaker, right? He has addressed the 149th Inter-Parliamentary Union in Geneva, and he is the Lok Sabha speaker. Correct. Then apart from this, the first edition of the G7 Defense Ministers Meet was held in Italy. Then WHO has declared Egypt as malaria free. Remember this important. And IMF, they have retained India's GDP growth forecast at 7% for FY25. Then who has been appointed as the National Ambassador for Cyber Safety? Rashmika Mandhana. Take a note of this. Then Sandeep Goenka has been appointed as the CEO of Ecolife. Then Kavita Shahai has been appointed as the Director General of Medical Services in Navy. Then Vijay Rahatkar has been appointed as the Chairperson of the National Commission for Women. Prabhavo Subianto appointed as the Indonesian President. Vikram Dev Dutt has assumed the charge as the Coal Secretary. Correct? Then if I ask you, Pam Kaur has been appointed as the first female CFO of HSBC. Then Bob Card has appointed Shriyanka Patil as the brand ambassador, a famous cricketer. Right? Moving on. Right? Take a note of this. Next, students, we are discussing about 59th edition of the DGSP IGSP conference that was held in New Delhi. What is this DGSP and IGSP? This is your Director General of Police / Inspector General of Police conference, right? As you can see here, a police personnel, correct? So this was the 59th edition of the Director General of Police / Inspector General of Police conference. Where was this held? Location? It was held in Bhubaneswar, Odisha. Right? This conference, as you can see him in the picture, he is Amit Shah, our Home Minister. He inaugurated this conference, right? And this conference was held in the hybrid format. It was held from 29th of November till 1st of December. Correct? This conference was also attended by Prime Minister Narendra Modi. Apart from this, remember, this was the 59th, right? If I ask you where was the 58th edition of this conference held, it was held in 2023 and it was held in Jaipur, Rajasthan. And we know Jaipur, sad news from Jaipur coming up, students. There was a gas leak and because of this there was a blast and there was multiple injuries and many people lost their life. Coming back to this conference basically aims to address the national security concerns. Right? It talks about the national security concerns. This talks about counter-terrorism. It talks about left-wing extremism. It talks about the coastal security issues. This talks about new criminal laws and also how can we increase our fight against narcotics. Correct? Take a note of this. One more thing, students, that is important and that I want you all to remember, which has been the best police station in India. So it is the Ichhapur police station that is in Surat, Gujarat, right? It secured the top position here. Moving on, students, next we are talking about CBIC, that is your Central Board of Indirect Taxes and Customs, and here you can see him in the picture. He is Sanjay Kumar Agrawal. Correct? So recently CBIC, they have launched new initiative that will provide various initiatives and enhance the taxpayer
services. This will enhance transparency, right? It will provide better experience to the taxpayers. Correct? This will promote various digital services that will be provided to the taxpayers. Correct? As per these services, if we talk about them, first is your revised citizen charter. This is a commitment to provide better service standard for the taxpayers, right? This will help us to provide better services such as your drawback, import and export of cargo, right? Related services to that. Then second is your ease of doing business, correct? That will provide better suggestions that how can you make your business easier, what are the requirements, what are the procedures, what are the policies that are required by them. Similarly, revamped citizens corner, right? Then CBIC archives, that is a digital window that will basically provide India's tax history. So these are some things, some services that are new initiatives that has been launched by CBIC to enhance the taxpayer service. Next we will be talking about critical mineral students, right? We know that critical minerals, they are important for the development of our country, right? And see, minerals are not just for production use or some other, but you need to understand that in today's world, the minerals are very important, and in almost every sector you will be seeing the minerals are used, be it electric vehicle sector, be it energy sector, be it your healthcare sector where various medicines are being developed, even in your infrastructure sector, right? So we are seeing that minerals are used everywhere. So as per the data recently released by Ministry of Mines, India's mineral production, such as your mineral conservation and development rules for non-ferrous mineral production, recorded a growth in the first 7 months, right? I repeat, up for non-ferrous metals, right? The growth in their production has increased, right? If we talk about iron ore, right, the production increased by 4.1% to 158.4 million metric ton during FY25, right? If we compare it to last year, it was 152.1 million metric ton. Similarly, if we talk about manganese ore, right, this production grew by 11.1%. If we talk about bauxite ore, the production grew by 11.3%. Correct? Similarly, if we talk about aluminium production, it saw an increase of 1.2%. Then if we talk about copper production, it saw an increase of 6%. So aluminium 1.2%, copper 6%, iron ore 4.1%, manganese ore 11.1%, and bauxite ore 11.3%. One more thing, remember, India is the second largest producer of aluminium. Second largest producer. And India is the fourth largest producer of iron ore. Correct? Moving on, students. Next is NCVET, that is your National Council for Vocational Education and Training. This comes under the Ministry of Skill and Development. And here, remember, they have officially recognized IN-SPACe, that is your Indian National Space Promotion and Authorization Center, that is an awarding body to strengthen the vocational education and training landscape in the space sector. This collaboration will help IN-SPACe to offer advanced training in satellite manufacturing, space technology, in agriculture, launch vehicle missions, orbital mechanics, space propulsion systems, and many other. Correct? So NCVET recognized IN-SPACe as an awarding body here. Correct? Take a note of this. Moving on. And one more thing, remember, this NCVET, it was established in 2018 by the Indian government so that various rules, regulations, right, can come into play, providing skills quality nationwide. Moving on, next we are talking about banking and finance students. World Bank has approved $325 million loan to boost the agriculture sector. And this agriculture sector will be boosted in Uttar Pradesh specifically. So $325 million loan has been approved in order to promote the Uttar Pradesh agriculture sector, right? And there is a sector that is UPAGREES. This is your Uttar Pradesh Agriculture Growth and Rural Enterprise Ecosystem Strengthening Project. This is the name of the project, for which $325.1 million, correct? This amount will be approved. This will enhance the crop productivity. It will provide better incomes to the farmers. It will help them to come up with various land. The farmers can also procure
a larger area or lease it a larger area of land where they can grow the farm. They can be funded with various seeds, various agriculture products such as your fertilizers, pesticides, so that the productivity of the crops can increase. Apart from this, here you can see UP has also become a key player in the Indian agriculture, leading in wheat production, second in rice, and third in agriculture export. Apart from this, this project aims to overcome these challenges and benefit 1 million producers in the eastern UP and Bundelkhand region of the state. Correct. If we talk about World Bank, who is the president of World Bank? Ajay Banga, right? And where is the headquarter of World Bank? It is in Washington DC. It was established in 1944. Next we are talking about RBI, Reserve Bank of India. They have granted full authorization to ISG as a payment aggregator. What is a payment aggregator? Payment aggregator is basically this term payment aggregator is you can collect money from individuals, right, for various services or products. Correct. So RBI, they have granted full authorization as a payment aggregator to whom? To ISG Limited. ISG is your IN-SOLUTIONS Global Limited. This is a Mumbai, Maharashtra based fintech company backed by JP Morgan Chase and Co. Right. This approval will empower the ISG to enhance digital payment experience for the merchants across various sectors, ensuring secure, efficient and reliable transactions while promoting the financial inclusion. Correct. Also remember, they have been also granted with the PPI license also, that is your prepaid payment instrument license. Next is economy and business. TCS, that is your Tata Consultancy Service Limited. They have partnered with Landis+Gyr to enhance the energy efficiency for utilities, right? So this is your Landis+Gyr. This is an energy management company that is based in Switzerland, right? Where is this based? It is based in Cham, Switzerland. And with this partnership, these together will provide various innovative solutions that will help the utilities improve the energy efficiency. They will provide end-to-end solutions including energy optimization, demand response, and smart electric vehicle charging infrastructure, because we know that in India we are boosting electric vehicle promotion, right? We want that more and more adoption of electric vehicles should be there, but the process where we are lagging is the infrastructure, right? Infrastructure is not there. Charging infrastructure is lacking in India, because of which the adoption that is needed is not there. So this will help, these partnership will basically help to promote the infrastructure here, right? This will also help in reducing the emissions and improve efficiency and integrate the renewable energy sector. Also, you will be seeing if electric vehicles infrastructure is developed and more adoption is there, then the carbon dioxide emissions will be reduced. Correct. Also remember TCS, they have together in partnership with them, they have released a TCS Clever Energy Management System. This is an emission management system that has been launched by them that will be keeping in track of all the emissions. Next is awards and recognition. Winners of Sahitya Academy 2024 award announced, and total of 21 Indian languages have been awarded here, right? So Sahitya Academy award, this is given in the field of literature, and during this 21 Indian languages that included English, right? So these books were selected based on the recommendation made by the jury of 3 members in concerned languages that included your Bengali, Dogri, Urdu languages, right? The Bengali, Dogri and Urdu languages. In them, the Sahitya Academy Award winner will be declared later. Correct? For 21 languages including English, the awards has been announced, but for Bengali, Dogri and Urdu, the awards will be announced later. Apart from this, the award ceremony for this will be held on the International Women's Day, that is on 8th of March in 2025 in New Delhi. Next, friends, we are talking about the Hurun India's top 200 self-made entrepreneurs list. This list has been released by Hurun India in partnership with IDFC First Bank Limited, right? And they have released, this is the second edition of this list that has been released here. So Hurun India and IDFC, they together released the second edition of the India's top 200 self-made entrepreneurs of the millennia 2024 list. As per the list, Radhakrishnan S. Damani, the founder of DMart, has topped the list for the second consecutive time, right? Radhakrishnan Damani of
DMart secured the first position for second consecutive time. Then Dipender Goyal of Zomato secured the second position here, right? And so on. So these are some names that I want you all to take a note of this. The first two are important, so take a note of it, right? If we talk about Huron report, right? So who is the managing director and chief researcher of Huron India? Anas Rahman Junaid, headquarter of which is in Mumbai, Maharashtra. Correct? Next students, we are talking about appointments and resignation. Suman K. Berry, as you can see him in the picture here, he is Suman K. Berry, right? And he is the vice chairman of Niti Aayog, correct? He was appointed as the chairman of Economic Advisory Council to the Prime Minister with an additional charge. So here you can see Suman K. Berry appointed as the chairman of Economic Advisory Council to the Prime Minister with the additional charge. He will succeed whom? He will be succeeding Vivek Debroy, correct? Because Vivek Debroy passed away on 1st of November in 2024. Correct? So Suman K. Berry, take a note of this. He has been appointed as the vice chairman of Niti Aayog. Then he was also on the board of Shakti Sustainable Energy Foundation in New Delhi. He has previously worked as the director general of NCAER. Correct? Apart from this, if we talk about this Economic Advisory Council to the Prime Minister, this is an independent body set up to provide advice on economic and related matters to the Government of India, especially to the Prime Minister. Right? Then, who is the chairman of Niti Aayog, if I ask you? So, chairman of Niti Aayog is the current Prime Minister of India, who is Narendra Modi, and this is the third consecutive time that Narendra Modi is the Prime Minister of India. Moving on, next is Justice Manmohan has been sworn in as Supreme Court Judge. Take a note of this. The former Delhi High Court Chief Justice Manmohan has been appointed as the Judge of the Supreme Court under the Article 124 Part 2 of the Constitution of India. Justice Manmohan was born on 17th of December 1962, and the Supreme Court now has 33 working judges with a sanctioned strength of 34. Who is the Chief Justice of India? Sanjeev Khanna. Your homework is to tell me which number of, or don't look at it, right? Tell me which number of Justice or Chief Justice of India Sanjeev Khanna is, right? This is your homework. Give me the number. Correct? Moving on. Next is Science and Technology. Survey vessel INS Nirdeshak commissioned into the Indian Navy. This INS Nirdeshak, also known as Yard 3026, correct? This is INS Nirdeshak. This is the second of 4 survey vessels, and this has been recently commissioned into the Indian Navy at the Naval Dockyard in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. The ceremony here was led by Union Minister of State, as you can see him in the picture here, Sanjay Seth of Union Minister of State for Ministry of Defence, correct? This SVL, that is Survey Vessel Large Project, includes 4 ships that are Sandhyak, INS Sandhyak, INS Nirdeshak, INS Ikshak, and INS Shanshodhak. Correct? Take a note of this. This INS Nirdeshak, that is Yard 3026, has been built with 80% indigenous material, and it has been inducted to enhance the hydrographic surveys, navigation, maritime safety using the advanced technologies. Next is Indian Army. Indian Army has received the second batch of 360 loitering munitions known as the Nagastra 1. As you can see here, this is a Nagastra 1, correct? And this is the second batch of 360 loitering munition. This Nagastra 1 has been received to Indian Navy from Nagpur based Economic Explosive Limited, that is EEL, correct? This is a subsidiary of Solar Industries India Limited, that is SLIN. Right, the contract for this was 2.12 billion rupees, not dollar. So take a note of this. If we convert it into dollar, this is close to $25 billion. Also remember, this Nagastra 1 has been developed with over 75% indigenous content. It is lightweight, and as you can see, this is not a proper airplane, but it is a UAV, that is unmanned aerial vehicle. So it is a drone, right? This will enhance the capability of Indian Army. It has capability to be equipped with 1 kg of high explosive. It weighs around 30 kilograms and it has a range of 15 kilometers. Correct? Next is 7th MCA barge LSAM 14 launched in Maharashtra. LSAM, right, that is Landing Ship Ammunition
14. So 7th missile cum ammunition barge landing ship ammunition 14, that is yard 82, was launched at the Mira Bhayandar site in Maharashtra by Seacon Engineering Private Limited, that is a MSME shipyard based in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. Right, directly remember this. Moving on, this barge was basically indigenously designed in collaboration with Indian ship design firm and underwent successful model testing at the Naval Science and Technological Laboratory in Vishakhapatnam. Correct? Next we are talking about environment, and researchers have recently discovered a new antlion species, as you can see here, right? It has been named as Palpares contrarius, right? It has been named as Palpares contrarius. This is the name of this new antlion species. Correct? Take a note of this. And where was this discovered? This was discovered in Tamil Nadu. Next, as you can see him in the picture, first of all, this is related to sports, and as you can see him in the picture, he is Ravichandran Ashwin, a very famous Indian spinner. Correct? And now he has announced his retirement from the international cricket. He is the second highest wicket taker in India in the test cricket with 537 wickets in 106 matches, and he has recently announced retirement. Apart from this, remember students, these are some of the awards and honors that were awarded to Ravichandran Ashwin. ICC Men's Cricket of the Year 2016, Arjuna Award in 2015, Paulie Umrigar Award in 2012-13, ICC Test Team of the Year for multiple years, then CHSL International Cricketer of the Year, ICC Men's Team of the Decade, right? So these awards have been granted to him. Next is related to sports only. FIH Hockey Women's Junior World Cup 2025 to be held in Chile. I repeat, FIH, that is International Hockey Federation, that is headquartered in Switzerland, has announced that the 11th edition of the FIH Hockey Women's Junior World Cup 2025 will be held where? In Santiago, Chile. And this will be the 4th time that the South American country has hosted this prestigious event. Next is related to obituary students. Padma Shri awardee Baiga tribal artist Jodhaya Bai has recently passed away. I repeat, Padma Shri awardee Baiga tribal artist Jodhaya Bai has recently passed away at the age of 86 in Madhya Pradesh. She was born in 1938 in Madhya Pradesh only, and she was awarded with Padma Shri in 2023, and this is for her contribution in the field of arts. Next is important days. International Human Solidarity Day observed on 20th of December, and this day is observed basically to create awareness about the solidarity in basically addressing the global challenges such as poverty, inequality and injustice. For the first time, this day was observed on 20th of December in 2006. This day is observed by UNHRC, that is your United Nations Human Rights Council. Right? So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial in your learning. Whose birth anniversary is commemorated on National Milk Day, that is on 26th of November in India. See, Milk Day, right? Who is famous or who is known as the father of White Revolution or milkman of India? So he is Varghese Kurin, Dr. Varghese Kurin. He is also known as the father of White Revolution. White Revolution is related to the revolution in the dairy products, dairy sector, right? And Dr. Varghese Kurin, also known as the milkman of India. This year it was the 103rd birth anniversary of him. For the first time, this National Milk Day was observed in the year 2014. Next, which Indian city has recently inaugurated the world's first all-women bus depot, that is Sakhi Depot? Right? So where is this? It is in New Delhi. India's first all-women bus depot, Sakhi Depot, is in India, is in New Delhi. In New Delhi too, it is at Sarojini Nagar. Right? And this initiative features an entirely female workforce that includes your drivers, conductors and other staff. Next is, which bank has recently raised 10,000 crore rupees at a coupon rate of 7.23% through their 7th infrastructure bond issuance? It is SBI, State Bank of India, right? Coupon rate here is of 7.23%. That is, this much interest per month per year will be given. The tenure here will be for 15 years, and the amount raised here is 10,000 crore rupees.
Next, name the portal that was launched by the Ministry of Statistics and Program Implementation to facilitate seamless access to official statistics in India. So it is e-Sankhi portal, right? This is the portal that was recently launched. This portal is designed to enhance the accessibility and will provide official statistics in India that are based on various surveys and census. And this e-Sankhi portal has been launched with its own API that will ensure the data accessibility by various platforms that includes the National Data and Analytics platform. Next, which organization has recently celebrated the Diamond Jubilee on 26th of November in New Delhi? So which organization it is? It is National Federation of State Cooperative Banks Limited, and Diamond Jubilee is for 60 years. Right? Where was this event held for this Diamond Jubilee? It was held at Bharat Mandapam in New Delhi. And Union Minister Amit Shah stated that in 2027, India will become the third largest economy in the world. Right? And it is expected that next year in 2025, we will become the fourth largest economy. Next, which country has recently signed the final act of the Riyadh Design Law Treaty? So, which country signed the final act of Riyadh Design Law Treaty? It is our India. Right? After the negotiations of almost 2 decades, this treaty has been adopted by the members of World Intellectual Property Organization. This will harmonize and simplify the registration process for various industrial designs. Next, which organization has recently signed an agreement with the India's Ministry of External Affairs to implement solar energy projects in Fiji, Comoros, Madagascar and Seychelles? So, which organization signed this agreement? It is International Solar Alliance, that is ISA, the headquarters of which is in Gurugram, Haryana. Right? Take a note of this. Moving on, which of the following companies has not received the license by RBI to operate as a payment aggregator cross-border entity? So among the following, it is Razorpay. It has not received the license by RBI for payment aggregator cross-border entity, right? Cash free payments, Amazon Pay, Aid in India and BillDesk, they have all received this license. Next, in November, World Bank approved dash amount of funding for enhancing the landscape and ecosystem management project in Tripura and Nagaland. What is the name of this project? Element. Question can be asked that what is the name of that project for which World Bank has funded so and so amount for the landscape and ecosystem management in Tripura and Nagaland? It is Element. And vice versa can also be asked that Element project will be implemented in which 2 states? It will be in Tripura and Nagaland. So how much amount funding has been approved? It is $225.5 million funding has been approved. In this Element project, the target is to conserve and restore 1 lakh hectares of forest and biodiversity. Also, it will prevent 4,35,000 tons of carbon emissions to mitigate the climate change. Next is who has recently become the first Indian to host International Emmy Awards 2024. So, Veer Das, right? He recently hosted the 52nd edition of International Emmy Awards that took place in New York, USA, and he became the first Indian to host this event. Next, which platform has recently partnered with Urban Company to empower women salon and beauty parlor owners? So, women entrepreneurship platform, right? They partnered with Urban Company and they are recently empowering the women salons and beauty parlor owners. Next, name the campaign that was launched by the Union Minister Annapurna Devi to eradicate child marriage and empower the young girls in India. So name of that campaign is Bal Vivah Mukt Bharat, right? This launch coincides with the 16 days of activism against gender-based violence. Also, this event marked the launch of Child Marriage Free Bharat portal. The aim of this campaign is to reduce child marriage below to bring that the total number of child marriage below 5% by 2029, right? And under this law, it is prohibited to get a girl married under 18 years of age and boys under 21 years of age. Next, students, is your homework section. First is tell me recently
विच एडिशन ऑफ कला महोत्सव was recently inaugurated by Prime Minister Narendra Modi? Second, which edition of Rashtriya Poshan Maha closing ceremony held where? So, which edition of Rashtriya Poshan Maha closing ceremony of which was held where? Third, tell me recently, this was on 2nd of October, Gandhi Jayanti was held. So, which edition of Swachh Bharat Abhiyan was held? Right, so which edition of it was there? So these are your 3 homework questions, students. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 22 और 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा सेशन रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एंड तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेयर हाउसेस के बारे में कि फार्मर्स को फाइनेंस करने के लिए कि वो अपने पोस्ट हार्वेस्ट अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सकें। देन हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी उड़ीसा में, वहाँ पर अवार्ड दिया गया है बेस्ट पुलिस स्टेशन का। वो कौन सा पुलिस स्टेशन है उसको देखेंगे। देन हम बात करेंगे CBIC, इन्होंने नई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं टैक्स पेयर सर्विसेज को एनहेंस करने के लिए। देन मिनरल्स एंड नॉन फेरर मेटल्स का जो हमारा ग्रोथ है उसको हम डिस्कस करेंगे, किस ओर में हमें कितना ग्रोथ देखने को मिला, राइट। एंड इसी के अलावा इन स्पेस से रिलेटेड हम एक न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो आपकी लर्निंग में हेल्प करने वाली है। तो इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम डेली करंट अफेयर्स वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर हो सके। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट गारंटी स्कीम की, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च की गई है। ये क्रेडिट गारंटी स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई है ENWR बेस के लिए। एंड ENWR क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स के लिए, राइट। ये बेसिकली क्या है कि आप फार्मर्स को यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट, ताकि पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद वो जो भी प्रोड्यूस हो उसको वेयर हाउसेज में वो स्टोर कर सकें। इससे क्या होगा, वो जब राइट टाइम आएगा, राइट प्राइस होगा या जब हमें डिमांड होगी, उस टाइम पर यहाँ पे अपनी प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं, राइट, एंड स्टोर कर सकते हैं। कि क्योंकि जो आपकी ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ऐसा होता है कि अगर आप उसको ज़्यादा देर खुले में रखोगे ना, वो खराब हो जाएगा, ज़्यादा दिन भी नहीं चल सकता। तो आपको राइट टाइम पे वो सेल करना होता है। तो उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से स्टोर कर सके, उसकी शेल लाइफ बढ़ा सके। तो वेयर हाउस यहाँ पर वो काम आते हैं, एंड इनके भी फिर चार्जेस लगते हैं स्टोर करने के लिए। तो फार्मर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करा सकें, ताकि हार्वेस्ट के बाद जब वो वेयर हाउस में अपना प्रोड्यूस को स्टोर करना चाहे, वहाँ पे उनको फाइनेंस में हेल्प मिल सके। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की यहाँ पे फंडिंग अप्रूव की गई है, जिसके अंडर 75 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आप अमित शाह देख सकते हैं। अमित शाह ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस को, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में हुई। आई रिपीट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस एंड या फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस, ये अभी हमें देखने को मिली कहाँ पर? भुवनेश्वर
ओडिशा में ये हमें देखने को मिली। हाइब्रिड फॉर्मेट में हुई थी, 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक ये हुई थी। एंड इस कॉन्फ्रेंस में को अटेंड किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, करेक्ट। एंड यहाँ पर बेसिकली आप समझिए कि ये कॉन्फ्रेंस पुलिस से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे सेफ्टी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर बात की गई, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में एंड लो लेवल डिस्ट्रिक्ट्स में भी, मतलब लो लेवल मतलब छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी, राइट। फिर इसके अलावा यहाँ पे बात की गई कि कैसे हम जानते हैं आजकल आपके साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, उनको रोका जा सकता है, करेक्ट। तो इन सभी के ऊपर यहाँ पे बात की गई, यानी इनको नेशनल सिक्योरिटी मैटर डिक्लेयर किया गया कि हम इसको और हमें बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करनी है कोस्टल एरियाज में। जो हमारे नए लॉज आए हैं उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। एंड जो भी नारकोटिक्स के खिलाफ इतनी वॉर छिड़ी हुई है सरकार के द्वारा, हम उसको भी यहाँ पे कंट्रोल में कर सकें, ठीक है। फिर इसी के अलावा यहाँ पर अमित शाह जी ने पुलिस मेडल्स दिए फॉर मेरिशियस सर्विस टू 13 पुलिस सीनियर ऑफिसर्स एज वेल एज, अगर अब मैं पूछूं, जैसे मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था, कौन सा वो पुलिस स्टेशन है जिसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी या फिर हम बोले टॉप पोजीशन सिक्योर करी, वो है इच्छापुर पुलिस स्टेशन, जो कहां पर है, सूरत गुजरात में है, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। Also students, let's revise some current affairs. Recently, President of India Draupadi Murmu ma'am was honored with the honorary doctorate where in Algeria, right. Then recently cabinet has approved the MSP, right, for rabi crops for FY26. Then recently Mera Hou Chongba festival, it was held where, it was held in Manipur, right. Then recently, remember railways, they have decided to cut the advance booking period from 120 days to just 60 days. Apart from this, if we talk about which countries is the first recipient of rupee loan under the ideas of government of India. So the first country to avail loan under this ideas of the government of India is Mauritius. Then PM Narendra Modi inaugurated Karam Yogi Saptah. It was inaugurated where? In New Delhi. Then which state has launched AI tool Shiksha Copilot for teachers? So this AI tool Shiksha Copilot was launched by the Karnataka state. Then apart from this, remember E-Sharam one-stop solution has been launched for unorganized workers by Mansukh Manviya ji. And recently 9% overall prevalence of the diabetes has been seen in Jammu as per the study. Apart from this, it is Assam state that has launched SWIFT project, right? It was launched with the help of Asian Development Bank. Then apart from this, remember NCRTC, they have organized the first Namo Bharat Divas where in New Delhi. Then which state has launched Citizen Sentinel application to keep track of the traffic rule violations? So it was launched by Kerala state. Apart from this, which government has set up Rajasthan Economic Tribal Task Force? I have said it, so it is Rajasthan government that has set up a economic revival task force. Apart from this, if I ask you recently, which country is richest in terms of the sovereign wealth fund? It is Abu Dhabi. Then Om Birla ji, our speaker, right? He has addressed the 149th Inter-Parliamentary Union in Geneva, and he is the Lok Sabha speaker. Correct. Then apart from this, the first edition of the G7 Defense Ministers Meet was held in Italy. Then WHO has declared Egypt as malaria free. Remember this important. And IMF, they have retained India's GDP growth forecast at 7% for FY25. Then who has been appointed as the National Ambassador for Cyber Safety? Rashmika Mandhana. Take a note of this. Then Sandeep Goenka has been appointed as the CEO of Ecolife. Then Kavita Shahai has been appointed as the Director General of Medical Services in Navy. Then Vijay Rahatkar has been appointed as the Chairperson of the National Commission for Women. Prabhavo Subianto appointed as the Indonesian President. Vikram Dev Dutt has assumed the charge as the Coal Secretary. Correct? Then if I ask you, Pam Kaur has been appointed as the first female CFO of HSBC. Then Bob Card has appointed Shriyanka Patil as the brand ambassador, a famous cricketer. Right? Moving on. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इनके द्वारा भी नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, नई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं जो कि टैक्स पेयर सर्विसेज को और बेटर करेंगे। इससे क्या होगा, जो टैक्स पेयर का एक्सपीरियंस है वो बेटर होगा। हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी यहाँ पर, राइट। एंड एक
टैक्स पेयर सेंट्रिक गवर्नेंस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की बात की गई यूजिंग डिजिटल मेथड्स, डिजिटल मीडियम्स की मदद से यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स को सर्विस है वो बेटर करें और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, राइट, कोई झोल झाल ना हो। इसमें हम देखेंगे कि जो ये प्रोवाइड करेगा अपडेटेड टाइमलाइंस एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड्स फॉर टैक्स पेयर सर्विसेज फॉर ड्रॉबैक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एयर कार्गो। देन यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड बात की गई। देन रिवैम्प्ड सिटीजन्स कॉर्नर के ऊपर बात की गई, राइट, जिससे आपकी जो भी प्रोसेस है टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, राइट, उसको सिंप्लीफाई करके, राइट, आप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। एंड इंडिया की जो भी टैक्स हिस्ट्री है इंडियंस की, राइट, इंडिविजुअल्स की जो टैक्स हिस्ट्री है वो यहाँ पर प्रॉपर आप सबमिट कर सके, ठीक है, आपको एक ही जगह वो मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी मिनरल्स की। देखो हम जानते हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ना वो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन्स, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, इवन आपका टीवी हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर में दवाइयों को बनाने के लिए, इसके अलावा हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके बात करें अगर हम डिफेंस सेक्टर में, तो हर जगह आपके मिनरल्स को यूज़ किया जाता है, राइट। तो मिनरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनकी माइनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट आ जाती है कि उसको प्रॉपर तरीके सस्टेनेबल तरीके से करा जाए, राइट। तो अभी डाटा रिलीज किया गया कि जो मिनरल एंड नॉन फेरस मेटल्स हैं, राइट, उनके हमें प्रोडक्शन में ना इंक्रीज देखने को मिला है। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात करें, जैसे अगर मैं आयरन ओर की बात करूँ तो यहाँ पर हमें आयरन ओर में हमें 4.1 का इंक्रीज देखने को मिला लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगर मैं मैग्नीज ओर की बात करूं तो 11.1% का इंक्रीज देखने को मिला। वहीं पे अगर मैं एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात करूं तो 1.2% का इंक्रीज देखने को मिला। कॉपर प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो हमें 6% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। एल्यूमिनियम की एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का ग्लोबली, टॉप पर चाइना जाता है। अगर मैं आयरन ओर की बात करूं तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर, फिर ब्राजील, फिर चाइना एंड फिर हमारा इंडिया, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंटली IN-SPACe को एज अ अवार्डिंग बॉडी डिक्लेयर किया गया बाय NCVET। सबसे पहले तो NCVET क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है, राइट। इनका बेसिक एम क्या है कि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करना, उनको इंडस्ट्री रेडी बनाना, ताकि आज की मार्केट में अगर उनको कोई भी जॉब की रिक्वायरमेंट है तो उससे रिक्वायर्ड जो भी स्किल है वो उनके पास होनी चाहिए, राइट। एंड इतने मास स्केल पर ये प्रोवाइड कराना एक अलग से चैलेंजिंग चीज होता है, राइट। बट याद रखिए ये NCVET को इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में बाय इंडियन गवर्नमेंट, ताकि एजुकेशन स्किल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सके और क्वालिटी स्किल्स यहाँ पे लोगों तक पहुंचाई जा सके, करेक्ट। एंड इसी के अंडर यहाँ पे याद रखिए अभी NCVET ने इन्होंने रिकॉग्नाइज किया IN-SPACe को एज एन अवार्डिंग बॉडी। मतलब अवार्डिंग बॉडी का मतलब क्या कि इनके साथ मिलकर अब यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, लॉन्च व्हीकल मिशंस में, ऑर्बिटल मैकेनिक्स में, राइट, स्पेस प्रपल्शन सिस्टम्स में। तो इन सब चीज़ों में यहाँ पे NCVET एंड IN-SPACe दोनों मिलकर यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा के, बेटर करिकुलम बना के, बेटर कोर्सेज प्रोवाइड करा के लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे, ताकि देखो फ्यूचर में डिमांड किस चीज़ की है, हमें स्पेस सेक्टर की डिमांड है, राइट। हम देख रहे हैं ड्रोन्स की यूज़ बढ़ती जा रही है। हम बात कर रहे हैं आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ग्रो कर सकें एग्रीकल्चर सेक्टर को, राइट। जैसे सैटेलाइट्स हो गई, राइट, ड्रोन्स हो गए, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को इनको इनकॉर्पोरेट करके कैसे हम यहाँ पे ग्रोथ ला सकते हैं, राइट। तो NCVET रिकॉग्नाइज्ड IN-SPACe एज एन अवार्डिंग बॉडी, जिसके साथ मिलकर यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके स्किल्स प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी अप्रूव किया गया $325 मिलियन का लोन, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। टू बी प्रिसाइज 325.1 मिलियन डॉलर का ये लोन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड यूपी में स्पेसिफिकली यूपी स्टेट में एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए इतना अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट के अंडर किया जाएगा, वो है UPAGRWS, जो कि है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इको स्ट्रेंथनिंग सिस्टम। ये एक प्रोजेक्ट रहेगा, इससे फार्मर्स की जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाकर इनकम को ग्रो करने की यहाँ पे बात की जाएगी कि कैसे हम फार्मर्स की इनकम को और ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखेंगे यहाँ पर आप ये 10 साल में पिछले यूपी में, करेक्ट, यूपी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्लेयर बन गया है इंडिया में। वो व्हीट प्रोडक्शन में लीड कर रहा है, सेकंड है राइस में एंड थर्ड है एग्रीकल्चर
एक्सपोर्ट्स में। इवन आप देखेंगे यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट ये एम करता है टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड बेनिफिट 1 मिलियन प्रोड्यूसर्स इन द ईस्टर्न यूपी एंड बुंदेलखंड रीजन, ताकि उनको ग्रो किया जा सके, उनको आगे लेके बढ़ा जा सके। इवन आप देखेंगे अभी एक इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट हब बनने वाला है जेवर एयरपोर्ट के पास, जो कि ग्रेटर नोएडा में होगा, जिससे इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्शन रहेगा एंड वहां से अगर आपको एक्सपोर्ट भी कर रहा है ना, उससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। कमिंग बैक, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? अजय बंगा जी। हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में, एंड 1944 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आरबीआई ने अभी रिसेंटली पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया है, ऑथराइजेशन दिया है टू आईएसजी। आईएसजी क्या है? ये एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इन सॉल्यूशंस ग्लोबल लिमिटेड, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड रहेगा एंड जेपी मॉर्गन के द्वारा इसको फंड किया गया है। अब ये जो इनको लाइसेंस मिला है पीपीआई लाइसेंस, एक और चीज इनको पीपीआई लाइसेंस भी मिला है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस, करेक्ट। कमिंग बैक, इनको जो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला, ऑथराइजेशन मिला, इससे क्या होगा कि अब ये मर्चेंट से ना पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी अगर पेमेंट करनी है किसी सर्विस या फिर आपकी प्रोडक्ट्स के लिए, तो उनसे ये पेमेंट कलेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। अभी टीसीएस ने पार्टनर किया है लैंडेस प्लस जायरो, राइट, इसको ऐसे ही रख लो, लैंडेस प्लस जीवाईआर, जहां पे प्लस आ जाए उन्होंने टीसीएस क्या करती है? स्टूडेंट्स को कंपनियों में लेती है, राइट, ग्रोथ बढ़ाती है इंडिया की, तो प्लस करती है, तो प्लस लैंडेस प्लस जीवाईआर, इनके द्वारा यहां पर अभी पार्टनरशिप करी गई, जिससे क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम किया जाएगा कि हम कैसे एनर्जी एफिशिएंसी, जो यूटिलिटीज हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट, उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और बेटर एनर्जी एफिशिएंट एक सिस्टम बना सकते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, जो हमारे इंडिया में, पूरे ग्लोबल में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड है, इंडिया में इंप्लीमेंट करना इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, पर उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो पॉल्यूशन के तौर पे एज अ सेकंड प्रोडक्ट निकलती है, बाय प्रोडक्ट निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, राइट, इनको हमें खत्म करना है, तो हमें ईवी पे कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, ताकि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर आ सकें, राइट। आपको चलते फिरते आप एक जगह पॉल्यूशन ना क्रिएट करें, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन होता है। इसका एक एग्जांपल देखो स्टूडेंट, कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था ना, तो मैं कई बार बाहर निकला, राइट, किसी भी काम के लिए, या फिर घर में थे मोस्ट टाइम, बट शाम को जैसे घूमने चले गए, तो हमने देखा था उसकी जब गाड़ियां बंद हुई थी ना, तो हमारा इन्वायरमेंट पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा था। हमारा जो पॉल्यूशन है ना, वो ना के बराबर हो गया था, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो गया था, पॉल्यूशन फ्री हो गया था। तो कहीं ना कहीं इतनी गाड़ियां जो हमारे इंडिया में चलती हैं, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारी पॉल्यूशन पर भी, करेक्ट। सो कमिंग बैक, ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए, एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एंड रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करके हम ये सब अचीव कर सकें, इसके ऊपर यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टूडेंट्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। हम यहाँ पे बात करेंगे साहित्य अकेडमी अवार्ड की। लिटरेचर में ये दिया जाता है, और अभी 21 इंडियन लैंग्वेजेस को यहाँ पे अवार्ड किया गया साहित्य अकेडमी अवार्ड से, जिसमें इंग्लिश इंक्लूडेड है। यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस याद रखेंगे जिनको अभी अवार्ड नहीं दिया गया है, उनको फर्दर दिया जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बंगाली, उर्दू एंड डोगरी, ये वो 3 लैंग्वेजेस हैं जिसके अंडर अभी यहाँ पे अवार्ड नहीं दिए गए हैं। ये जो अवार्ड सेरेमनी होगी इंटरनेशनल वीमेंस डे के दौरान पर होगी, जो कि 8 मार्च को आता है 2025 में, एंड न्यू दिल्ली में इसका ये इवेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अभी रिसेंटली ह्यूरन इंडिया एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनके द्वारा पार्टनरशिप करके एक लिस्ट रिलीज की गई है, जो कि है इंडिया की टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट। ये लिस्ट बताती है कि कौन से वो ऐसे सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने टॉप किया है। सबसे टॉप पोजीशन पर आ जाते हैं कौन? सबसे टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं, लेट मी शो यू हियर, राधाकृष्ण दमानी जी, राइट। ये डी मार्ट के ओनर हैं, सुपरमार्केट चेन है डी मार्ट, राइट, इन्होंने टॉप किया। और इन्होंने सेकंड टाइम यहां पे इस लिस्ट में टॉप किया है। पहले पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन पर आ जाते हैं दीपेंद्र गोयल ऑफ जोमैटो, राइट, एंड सो ऑन। या प्लेस देख सकते हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज याद रखेंगे, ये सेकंड एडिशन है इस लिस्ट का, तो ये मार्क पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन यहाँ पे एडिशन रिलीज किया गया ह्यूरन इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स का, तो वो सेकेंड एडिशन है इस लिस्ट का। चलिए, अगर मैं ह्यूरन इंडिया की बात करूं, ह्यूरन रिपोर्ट इंडिया की, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ रिसर्चर, या फिर नहीं मैं बोलूं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्चर कौन है? वो है अनास रहमान जुनैद। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए
नेक्स्ट पे आता है, आप यहाँ पे ये लिस्ट देख सकते हैं, एक बार पॉज कर लो वीडियो को एंड जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। सुमन के बेरी कौन है? ये वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, राइट। एंड इनको यहाँ पे अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी टू द काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ये क्या होती है? ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। एंड ये काम करती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको यहाँ पे इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसमें हेल्प किया जा सके, राइट। उनको बताया जा सके कि क्या हमें यहाँ पे गाइडेंस या फिर एक तरीके के सजेशन प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, राइट, कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे हमें देश को आगे चलाना है, कैसे इकोनॉमी मेंटेन करनी है एंड एवरीथिंग। तो उनके चेयरमैन के तौर पे इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये है सुमन के बेरी। इसी के अलावा इन्होंने शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस में भी बोर्ड की पोजीशन संभाली है। इससे पहले ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो कि है NCVER। अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? BVR सुब्रमण्यम। एंड यहाँ पे चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। एंड ये इनका थर्ड टर्म है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं जस्टिस मोहन। इनको अपॉइंट किया गया, इनको ये अभी अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू चीफ कोर्ट के जज, राइट। एंड ये कौन है? ये फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं मनमोहन जी। एंड इनको अब अपॉइंट किया गया है एज द सुप्रीम कोर्ट जज अंडर द आर्टिकल 142 ऑफ पार्ट बी। इनको अपॉइंट किया गया है एज द सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट में 33 वर्किंग जज हैं। स्ट्रेंथ की जो सैंक्शन लिमिट है वो है 34। एंड अगर अभी देखें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी, राइट, इन्होंने एडमिनिस्टर की इनकी ओथ टू ऑफिस। होमवर्क लिख लो जल्दी से स्टूडेंट्स कि संजीव खन्ना जी ये कौन से, सॉरी ये देखना मत, संजीव खन्ना जी कौन से यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं? नंबर बताओ, राइट। एंड इन्होंने किनको सक्सीड करा? ये दोनों होमवर्क मुझे अभी नीचे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी सर्वे वेसल INS निर्देशक को कमीशन किया गया इनटू द इंडियन नेवी। ये सेकंड ऑफ द 4 सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट की शिप्स रहेंगी। INS निर्देशक कहाँ पे कमीशन किए गए? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको कमीशन किया गया, राइट। एंड इसी को INS निर्देशक को ही एक और नाम से जानते हैं, यार्ड 3026 के नाम से, राइट। ये 4 ऐसी शिप्स हैं, सेकंड ऑफ द 4th ही रिलीज की गई निर्देशक। फर्स्ट है संध्यक, निर्देशक, इक्षक एंड संशोधक। ये 4 यहाँ पे लॉन्च की जाएंगी। एंड इस INS निर्देशक में 80% इंडिजीनियस कंटेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एक UAV पे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं। इसका नाम है 360 नगास्त्रा 1, राइट। 360 तो नंबर है जो कि रिसीव की गई है, मतलब ऐसे 360 इंडियन आर्मी के द्वारा रिसीव किए गए नगास्त्रा 1। एंड ये 360 UAVs किन से द्वारा रिसीव किए जाएंगे? EEL जो कि है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा इनसे को रिसीव किए जाएंगे। ये EEL नागपुर महाराष्ट्र बेस्ड है। एंड $25 मिलियन यहाँ पे स्पेंड किए गए हैं इनके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, ताकि ये रिसीव की जा सके। 75% से भी ज़्यादा इंडिजीनियस कंटेंट है इनमें। एंड ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। देखो आज की जो वॉर है ना बिल्कुल चेंज हो चुकी है, ड्रोन्स का बहुत यूज़ हो रहा है। अभी आपने सुना होगा लेटेस्ट न्यूज़, रशिया में, राइट, एक ड्रोन अटैक हुआ है जो कि सिमिलर है 9/11 की। इनकी काफ़ी ऊंची बिल्डिंग थी रशिया में, उसमें जाके ड्रोन का अटैक है। बोला जा रहा है यूक्रेन ने ये करा है, राइट। तो ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है हाँ इस वॉर में भी, राइट। ये गेम चेंजर है डिफेंस में। कमिंग बैक, तो इससे हमारी काफ़ी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। नगास्त्रा 1 की बात करें तो ये लाइट वेट है, राइट, एंड मैन पोर्टेबल वेपनाइज्ड है ताकि प्रिसीजन स्ट्राइक्स ये कर सके। 15 किलोमीटर तक की ये रेंज है। एंड ऑटोनॉमस मोड में 30 किलोमीटर तक उड़ सकता है। एंड 60 मिनट तक इसकी एंड्योरेंस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाए तो बात करते हैं 7th MCA बार्ज LSAM 14, इसको लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में, राइट। ये है LSAM यार्ड 82 बार्ज, करेक्ट। एंड इसको लॉन्च किया गया मीरा भयंडर साइट पे इन महाराष्ट्र। किसके द्वारा? सीकेन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक MSME शिपयार्ड है बेस्ड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है 8 MCA बार्ज का, जिसमें से अभी एक बार्ज लॉन्च किया गया है, राइट, यार्ड 82 के नाम से। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं एनवायरनमेंट पर। हम बात करेंगे रेयर एंटेलियन, राइट। ये आप देख सकते हैं इसकी नई स्पीशीज डिस्कवर करी गई। ये एक ड्रैगन फ्लाई जैसा रहता है, राइट। इसका नाम रहेगा पाल्परेस कॉन्ट्रारियस, राइट। ये नाम है इस नई स्पीशीज का, जो कि ड्रैगन फ्लाई जैसी है बिल्कुल। कहाँ पे डिस्कवर की गई? तमिलनाडु में इसको डिस्कवर किया गया रिसर्चर्स के द्वारा।
फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स में आप देख सकते हैं ये है रविचंद्र अश्विन, राइट। ये इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, काफ़ी फेमस, काफ़ी बेहतरीन स्पिनर है, राइट। एंड इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। इनको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया है, जैसे आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2016 में, अर्जुन अवार्ड से 2015 में, पॉली उमरीगर अवार्ड से 2022-23 में, राइट, एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉकी से रिलेटेड। तो FIH हॉकी वीमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का कहां पर होगा? सेंटियागो, चिली में देखने को मिलेगा। एंड दिस इज फॉर द फोर्थ टाइम कि ये साउथ अमेरिकन कंट्री इस इवेंट को होस्ट कर रही है। तो वीमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का कहां पर? सेंटियागो, चिली में होगा। और ये इसका 2025 में कौन सा एडिशन हमें देखने को मिलेगा? ये 11वां एडिशन है इस वीमेंस जूनियर वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिटरी पर। पद्मश्री अवॉर्डी बायगा ट्राइबल आर्टिस्ट जोधैया बाई, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। मध्य प्रदेश की में इनका निधन हुआ, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 1938 में। 86 की एज में इनका निधन हो गया है। एंड ये पद्मश्री अवार्डी हैं। 2023 में इनको सम्मानित किया गया था फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। एंड बायगा ट्राइबल आर्ट को ग्लोबल रिकॉग्निशन देने के लिए इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 20 नवंबर को। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिडेरिटी इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। 20 दिसंबर 2006 में इस डे को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। एंड UNHRC जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिविजन पार्ट पर। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस कब ऑब्जर्व करते हैं? 26 नवंबर को। एंड इस बार हमने 75वां संविधान दिवस ऑब्जर्व किया। 75th एनिवर्सरी थी संविधान दिवस की नहीं, संविधान दिवस तो 2015 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये 75वीं एनिवर्सरी थी अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, राइट। नेक्स्ट whose birth anniversary is commemorated on National Milk Day, जो कि 26 नवंबर को होती है। तो डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, क्योंकि इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इन्हीं को फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन बोलते हैं, राइट। एंड फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन क्या था? डेयरी प्रोडक्ट्स में, डेयरी सेक्टर में, मिल्क प्रोडक्ट्स में यहाँ पर रेवोल्यूशन लाया था इन्होंने, करेक्ट। इसीलिए डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, इनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व करते हैं 26 नवंबर को। इस बार हमने कौन सी एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व करी है? डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन की 103rd बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है 2024 में। नेक्स्ट, किस इंडियन सिटी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का पहला ऑल वीमेन बस डिपो, जिसका नाम रहेगा सखी डिपो? न्यू दिल्ली में रहेगा, सरोजनी नगर में रहेगा ये। एंड यहाँ पे जो सारा स्टाफ है आपका वीमेन्स का ही स्टाफ रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रेज किया 10,000 करोड़ रुपीज एज अ कूपन रेट ऑफ 7.323%, मतलब 7.23% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा एनुअली। 15 साल का ये बॉन्ड रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के द्वारा इस बॉन्ड को यहाँ पे रेज किया गया है, राइट। कितना अमाउंट? 10,000 करोड़ रुपीज। एंड ये जो बॉन्ड यूज लिया गया है ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा टू फैसिलिटेट सीमलेस एक्सेस टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो पोर्टल का नाम क्या रहेगा? संखी पोर्टल। ये अपनी एक API के साथ खुद आता है जो इंश्योर करता है डाटा सिक्योरिटी, असेसिबिलिटी एंड नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म के साथ भी आप यहाँ पे डाटा को ला सकते हैं। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया डायमंड जुबली, जो कि है 60th जो एनिवर्सरी ऑन 26 नवंबर इन न्यू दिल्ली? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वो है नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राइट। मूविंग ऑन, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया फाइनल एक्ट ऑफ द रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी को? किस कंट्री के द्वारा? हमारे इंडिया के द्वारा साइन किया गया। आफ्टर अ डेकेड, 2 डेकेड्स ऑफ नेगोशिएशंस के बाद इसको साइन किया गया है। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट किया है। एंड इस ट्रीटी के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल डिजाइन्स के पैटेंट्स हैं, IP राइट्स हैं, उनको सिक्योरिटी फाइल करने का ये काम करेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर एंड सीशेल्स? तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस रहेगी। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में।
मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इनको रिसीव नहीं हुआ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस आरबीआई से। तो अगर यहाँ पे देखें रेजर पे वो कंपनी है जिनको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस यहाँ पर नहीं मिला है, बाकी सभी को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया कितने अमाउंट का फंडिंग फॉर एलिमेंट प्रोजेक्ट जो कि त्रिपुरा एंड नागालैंड में रहेगा। ये एलिमेंट प्रोजेक्ट क्या है, एनहेंसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। इस एलिमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे 1 लाख से भी ज़्यादा हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाएगा, 4,35,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाएगा, एमिशंस को रोका जाएगा, राइट। एंड ये प्रोजेक्ट कहाँ का है के लिए है, त्रिपुरा एंड नागालैंड के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट अप्रूव किया यहाँ पे, $225.5 मिलियन। तो कई सारी चीज़ें हो गई इसमें याद रखने की। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली या फिर कौन वो पहले इंडियन बने जिन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को। तो ये सबसे पहले याद रखेंगे 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स थे। वीर दास जो कि एक कॉमेडियन है, राइट, स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनके द्वारा होस्ट किया गया ये इवेंट एंड ये पहले इंडियन बने टू होस्ट इट। नेक्स्ट, किस प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली पार्टनर किया अर्बन कंपनी के साथ टू एम्पावर वीमेन सैलून एंड ब्यूटी पार्लर ओनर्स। तो किस प्लेटफॉर्म ने पार्टनर किया अर्बन कंपनी के साथ, वो है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, उस कैंपेन का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी के द्वारा टू एराडिकेट चाइल्ड मैरिज एंड एम्पावर यंग गर्ल्स इन इंडिया। तो वो है बाल विवाह मुक्त भारत, राइट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव भी इसके अंदर आ जाता है। देन यहीं पे हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल लॉन्च किया गया कि कोई भी चाइल्ड मैरिज हो रही है तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड गर्ल्स के लिए 18 साल, बॉयज़ के लिए 21 साल एज है शादी की। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने अनाउंस किया सिलेक्शन ऑफ 8 स्टार्टअप्स टू बूस्ट डैश एंड नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम टू सपोर्ट व्हाट। तो ये लॉन्च किया गया था टू सपोर्ट द नेशनल क्वांटम मिशन। देखो क्वांटम टेक्नोलॉजीज में ना क्यूबिट्स होती हैं जिससे आपकी प्रोसेसिंग होती है, राइट। एंड जैसे वैसे नॉर्मल बाइनरी होता है 0-1 पे चलता है सब कुछ, लेकिन क्वांटम फील्ड में या क्वांटम की सेक्टर में हम देखते हैं क्यूबिट्स। एंड इवन आप देखेंगे गूगल के द्वारा अभी क्वांटम चिप लॉन्च की गई है जिसका नाम है विलो। एंड ये बताया जा रहा है कि बहुत फास्ट है, इसमें जो कॉम्पिटिशन स्पीड है बहुत ज़्यादा है, आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम समय लेगी किसी भी बड़े से बड़े टास्क को करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द इंडिया सिंगापुर बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हेल्ड 28 से 30 नवंबर तक। तो अग्नि वॉरियर कहाँ पर हुई थी, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली थी अग्नि वॉरियर। एंड ये 13th एडिशन था इस एक्सरसाइज का अग्नि वॉरियर का। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, जो एनेबल करेगा कंज्यूमर्स को टू फाइल देयर कंप्लेंट। तो वो है ई दाखिल पोर्टल। आप इस पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ये एक एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को कि उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया मास्टर कार्ड के साथ ताकि MSME की फाइनेंसिंग की जा सके अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये किसके द्वारा किया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। मेन एम क्या है, MSMEs को फाइनेंस करना, राइट। MSME की फाइनेंसिंग के लिए ये साइन किया गया है। एंड इससे क्या होगा, $1 बिलियन यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंसिंग की करेगा 4 साल के लिए, राइट। एंड इवन यहाँ पे पार्टनरशिप ये तो हो गया टोटल, लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूँ मास्टर कार्ड के साथ जो मिलेंगे वो है $5 मिलियन की यहाँ पे फाइनेंसिंग की जाएगी। ये पैसा मास्टर कार्ड कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराएगा इंडिया में, जिससे फर्दर MSME लैंडिंग की जाएगी। एंड जो वीमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको यहाँ पे ग्रो करने का काम करेगा। एंड इसके थ्रू कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हेमंत सोरेन, इनको स्वॉन इन किया गया एज विच चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो ये 14 चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के। एंड इनका 4th टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, किनको अभी इलेक्ट किया गया 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो वो है मसातो कांडा। ये किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे मत्सुगु असाकावा को। नेक्स्ट, फ्रॉम विच सबमरीन, किस सबमरीन से भी टेस्ट की गई K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल। वो है INS अरिघात से इसको टेस्ट किया गया। INS अरिघात की बात करें तो ये इंडिया की 2nd न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक सबमरीन है, राइट। एंड ये जो K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है, ये K4 आपका अपडेटेड वर्जन है K15 मिसाइल का। एंड K4 की जो रेंज है वो एक्सपेक्टेड है कि 3500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट,
फॉर विच ईयर इंडिया रिसेंटली गॉट द होस्टिंग राइट्स फॉर एशियन राइफल पिस्टल कप। तो किस साल के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले, तो 2026 के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले हैं। एंड 2024 में याद रखेंगे इंडिया ने ISSF का वर्ल्ड कप फाइनल फॉर राइफल पिस्टल शॉटगन भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक MOU रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के साथ, ताकि एडवांस क्वालिटी की डायबिटिक केयर की जा सके इंडिया में। वो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट, अभी 18 NCB इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स देखने को मिला 27 से 29 नवंबर तक। इसके दौरान NCB लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है, वो है डॉक्टर HC विश्ववर्या। इनका जो सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्टर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट, इसको ग्रो करने के लिए एंड नेट जीरो फ्यूचर सीमेंट सेक्टर में अचीव करने के लिए, इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट, सिनबेक्स एक्सरसाइज, ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी एंड कंबोडिया आर्मी के बीच में कंडक्ट कराई गई। मार्क करके चलेंगे, इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी के बीच में। ये इस एक्सरसाइज में 20 पर्सनल देखने को मिलेंगे दोनों साइड से, इंडिया की तरफ से इन्फेंट्री ब्रिगेड से यहाँ पे देखने को मिले। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी, लोकेशन भी पूछा जा सकता है, तो पुणे महाराष्ट्र में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग की रिपोर्ट, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द फ्यूचर वर्क पब्लिश की गई जो जून 2022 में। द नंबर ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 23.5 मिलियन बाय व्हाट ईयर। तो 2029-30 तक 23.5 मिलियन यहाँ पर गिग वर्कर्स एक्सपेक्टेड है कि हो जाएंगे। एक और डाटा बताता है कि 2030 तक जो पोटेंशियल है, राइट, ये तो हो जाएंगे, लेकिन जो पोटेंशियल है वो है 90 मिलियन जॉब्स जनरेट करने का बाय द गिग सेक्टर, राइट। ये 1.25% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टू इंडियाज GDP। नेक्स्ट, इंडिया ने अभी रीइलेक्ट किया, इंडिया वॉज रीइलेक्टेड टू द UN पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर व्हाट टर्म, फॉर 25-26 के लिए रीइलेक्ट किया गया है, इंडिया को मार्क करेंगे। नेक्स्ट, टू विच कंट्री रशिया हैंडेड ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप, तो ब्रिक्स ने ब्राजील को हैंड ओवर कर दिया अपनी चेयरमैनशिप। एंड याद रखेंगे ब्रिक्स नेशन से 2 कंट्रीज ऐसी हैं, एक इंडिया एंड एक ब्राजील, जिन्होंने चाइना के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को मना कर दिया था और उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट, विच कंट्री एंड इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो कोलैबोरेट करेंगे ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी, तो वो है यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड UK। नेक्स्ट, when is UN Day of Remembrance for all victims of chemical warfare annually observed across globe? कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व करते हैं 30 नवंबर को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम होमवर्क सेक्शन पर आ जाते हैं। बताओ, पहला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, राइट, कहाँ पर देखने को मिला, करेक्ट, किस एरिया में आप कह सकते हैं। देन सेकेंड, अभी राजनाथ सिंह ने डेफ कनेक्ट इनॉग्रेट किया, कहाँ पर इनॉग्रेट किया, प्लस उसका एडिशन बताओ कौन सा एडिशन है, राइट। थर्ड पर आ जाते हैं, अभी रिसेंटली 3 कंट्रीज के द्वारा एक बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड पैक्ट, राइट। मैं एक नाम दे देता हूँ, उसमें हमारी इंडिया है एंड 2 हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनका मुझे नाम बताओ। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स, राइट। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।